शुरू करते हैं, how to prevent or delay the tip stall. So the problems that were associated with the other type of wings, we saw that tip stall is something that we don't want. It's an undesirable thing. It's not a desirable stall characteristic. So what we want to do is we want to delay the stall at the tip of the wing and we want to induce the stall at the root of the wing. To make this happen, we have many devices that are there in place. Okay. Or we can change the sections of the wing in a certain manner which will delay the stall at the tip. Let's see how. We have wing washout, we have leading edge devices, we have stall strips and vortex generators. These are the devices which can be applied to any form of wing, tapered, spanwise, anything. But then there are problems which are associated with the spanwise flow. There are problems which are associated only with the spanwise flow of air, with the sweep back wings. Now, to cater for that, we need to have air not move across the wing. स्पैनवाइज फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं. ओके, इन ऑल वी विल बी स्टडिंग अबाउट 8 सच डिवाइसेस. शुरू करते हैं. So these 4 first devices are delaying the stall at the tip and inducing the stall at the root. Let's see how. The first one is a wing washout. Let's have a reading. What is wing washout? It is a decrease in the angle of incidence. What is the angle of incidence? वंदना, आइडिया है? नहीं. पीयूष, जो एंगल आता है विंग का और एक अपने उसका zero keywords, zero keywords. Shrishti? It is the angle between the longitudinal axis of the aircraft and the relative airflow. That's incorrect. Would anyone else like to try? Is it the chord line? No guesses. Longitudinal axis and chord line. That's absolutely correct, Farhad. How do you know it? You were not there in the class. Previous videos देखे ना, recorded lecture. So Vandana, Harsh, what do you learn from Farhad? मैंने स्टार्ट कर दिया है. Sir, आपने आंसर तो नहीं किया. ठीक है? मतलब Okay, you started, but also start answering. If you know the answer, start answering. Vandana ने attend नहीं किया है, but he has seen all videos. He can answer it. He wants to get along with the class. जहाँ चाह होती है वहाँ होती है. ठीक है? Gear up. पीयूष, सृष्टि, एयरलाइन की वैकेंसी आ चुकी है. You guys cannot say this and that. No, you're a professional pilot. Speak like one, be like one. ठीक है? Gear up. So, angle of incidence is the angle between the chord line and the longitude, not longi, it's longitudinal axis of the aircraft. Is it a fixed angle? Yes, it's a fixed angle. है ना? दो rigidly जुड़ी हुई चीजों का angle. Now, what we do is we take this particular wing and ये जो टिप है, हम लोग इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ यूं कर देते हैं, यूं. ठीक है? हल्का सा, maybe about 2-3 degrees. 2-3 degrees is something that you won't be able to spot with the naked eye. हल्का सा ऐसे कर देंगे. इससे क्या होगा? अब मान लो अगर आप पिच अप कर रहे हो, इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा. अगर इसका एंगल 16 पहुंचेगा तो इसका एंगल 14 पे रहेगा. तो ये पहले स्टॉल होगा, ये रूट वाला सेक्शन पहले स्टॉल होगा. दिस थिंग इज नोन एज वॉश आउट. यहां से लेके यहां तक द डिक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वॉश आउट. अब मान लो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रूट स्टॉल की टेंडेंसी है, आप क्या करोगे? इसका उल्टा करोगे, वॉश इन करोगे, which is increasing the angle of incidence. Clear? So what will happen if you do a washout? The angle of attack, if your angle of incidence decreases at the tip, the angle of attack will decrease at the tip. So the tip will stall late. Easy. Let's talk about leading edge devices now. At the wing root, we generally try to put the Kruger flaps. I think we have discussed this in the flaps chapter also. And if you guys remember vividly, we had seen a Boeing 747 video where the Kruger flaps were in the inboard section of the wing. And the variable camber flaps or the slats were in the outboard section of the wing. Even if you set in an A320 next time,
जो आपका इंजन है ना, इंजन से फ्यूजलाज की तरफ जो भी लीडिंग एज डिवाइसेस रहेंगे, आप टेक ऑफ से पहले देखना, वो नीचे से क्रूगर फ्लैप्स बाहर निकलते हैं, एंड जो इंजन के उस साइड वाले टिप के तरफ वाले हैं, वहां से आप देखोगे स्लैट्स बाहर निकलते हैं 320 में। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग क्रूगर फ्लैप्स डालते हैं तो अल्फा क्रेट उतना बढ़ता नहीं है, नियर अबाउट सेम रहता है, whereas on the other hand स्लैट्स क्या करता है, वो अल्फा क्रेट बढ़ा देता है, right? We have seen this. So this is the reason why we keep slats at the tip section. Okay. The second device is understood. Let's understand the stall strip. Shrishti, Piyush, you guys must have seen what the stall strip is. You have a stall strip in the DA42. You do not have it in the Cessnas, but you do have it in the DA42s. Why do we have it in the DA42s? उसका टेपर्ड या डेल्टा Exactly. Exactly. That is. So you guys can see they have flown an aircraft which had a tapered wing. And to counter the effect of tip stall, you have something. Cessna mein nahi tha, because Cessna had a rectangular wing. So you have seen things happen in your real life. Okay. Let's see the same thing in Google. So please have a look. What I'm showing you right now here is a DA40 aircraft. So you see this is the leading edge of the wing. But what we do at some time, ये लीडिंग एज ऑफ द विंग में ना जो रूट वाला सेक्शन है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ऐसे तिरछी सी चीज लगा दी, एक छोटा सा ब्लेड टाइप का लगा दिया है, विच हैज अ वेरी वेरी शार्प लीडिंग एज। अगर आपका लीडिंग एज ज्यादा राउंड होगा तो एयर विल फ्लो वेरी ग्रेजुअली एंड इट विल नॉट सेपरेट, whereas अगर आपका लीडिंग एज इज लाइक अ नीडल एंड वो आप इस एंगल पे हो, जस्ट लाइक अ फ्लैट प्लेट, जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट वाली वीडियो में देखा था, एयर विल सेपरेट वेरी इजीली। So what are you doing? You're making the leading edge very very sharp. This is going to induce the separation. ये separation को बढ़ा देगा high angles of attack पे। इसका दूसरा benefit क्या है, अगर मैं इसको low angle of attack पे रखूं, ये drag नहीं produce करेगा। Airflow में ये drag produce करेगा? No. उल्टा तो अच्छे से ही काटेगा हवा को। It will make it more streamlined. So this is what you understand by a stall strip. This kind of a stall strip, see, it's simply a very triangular structure which is attached to the leading edge of the wing. Okay, at low angles of attack, the stall strip is just like a normal thing. हवा आ रही है, दोनों हिस्सों में बट जा रही है, लेकिन अगर आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाओगे तो ये स्टॉल स्ट्रिप की वजह से स्टॉल इंड्यूस हो जाएगा, एयर फ्लो सेपरेट हो जाएगी। तो बेसिकली जहां पे मुझे स्टॉल ज्यादा अर्ली इंड्यूस करना है, वहां पे एक स्टॉल स्ट्रिप लगा। अंडरस्टूड? तो कहाँ पे लगाया जाता है स्टॉल स्ट्रिप? जनरली लीडिंग एज पे लगाया जाता है। अंडरस्टूड? इज दैट इजी? Is that easy? मिल गया। You see this section? छोटा सा दिख रहा होगा, जो स्ट्रट है जस्ट उसके ऊपर एंड उसके राइट में। So that is the stall strip. You see this? दिखा? एकदम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। So that is again the stall strip. Okay. So now, can we say that you understand what the stall strip is? So basically, you're sharpening the leading edge of the wing. When you do that, आपका leading edge becomes not that round, camber कम हो जाता है, so alpha crit will come out. So हम लोग इसको कहाँ डालेंगे? Wing root पे रखेंगे, so that it will promote the wing root stall at high angles of attack. Okay. Lastly, we have the vortex generator. So vortex generator generates a vortex. What we do here is, let's say we have an aircraft. Air is flowing over the surface of the wing. एयर को सेपरेट कौन करता है? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। मेरा काम क्या है? माय वर्क इज टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द बाउंड्री। देयर आर सेवरल वेज टू डू इट। स्लैट फॉर्म कर दो, स्लॉट डाल दो, उससे भी एनर्जी बढ़ती है, कई बार तो रीजनरेट भी हो जाता है। ओके। ऑन द अदर हैंड वोर्टेक्स जनरेटर क्या करता है? अब इसके ऊपर से हवा आ रही है, एक काम करो, ये लीडिंग एज में तुम एक छोटा सा ऐसे खुरगुरी सी चीज ऊपर निकाल के डाल दो।
करीबन 2 सेंटीमीटर की चीज, काइंड ऑफ लाइक अ ब्लेड, अ crooked blade, and you place it in the airflow. What will happen is उसके आजू बाजू से एक vortex क्रिएट होगी, उसके आजू बाजू से एक vortex क्रिएट होगी, एंड ये vortex क्या करेगी, जो इतनी पतली सी बाउंड्री लेयर थी, वो vortex जब जानबूझ के क्रिएट होगी, ये बेसिकली इंड्यूसिंग अ टर्बुलेंट एयर फ्लो. सो उसके ऊपर जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, उसके ऊपर से जो फ्री स्ट्रीम फ्लो है, आप बेसिकली उसकी एनर्जी लेके उसको आप नीचे ज्यादा चिपका रहे हो, उसको टर्बुलेंट बना रहे हो लोअर लेयर्स को. यू आर ट्राइंग टू इंड्यूस मोर एनर्जी फ्रॉम द अपर फ्री स्ट्रीम मूविंग फ्लो इनटू द बाउंड्री लेयर by with the help of that blade generating a vortex. ऊपर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, मस्त बढ़िया चल रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है. एक काम करो, vortex डालो, उसकी एनर्जी नीचे चिपका दो. So what does this do? This will delay the separation. तो मुझे जहाँ सेपरेशन डिले करनी है, जहां मैं चाहता हूँ कि स्टॉल लेट से हो, वहां पर मैं वोटेक्स जनरेटर डालूंगा अपर सरफेस पे. ठीक है. सो व्हाट डज दिस हेल्प अस डू? इट री एनर्जाइजेस द बाउंड्री लेयर. इट एड्स द एनर्जी. वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की जो एनर्जी है, फ्री स्ट्रीम फ्लो की जो एनर्जी है, ये तो यहाँ पे आके सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वोटेक्स जनरेटर डाल दूँ, तो इसकी वेलोसिटी इसके अंदर आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी, इसकी फ्लो इसके अंदर आ जाएगी. Understood? So that is what a vortex generator helps you to do. Okay. One more thing, please note it down. Whenever you solve questions, you will always get confused between the words regenerate and re-energize the boundary. A vortex generator can never regenerate a boundary layer. Only a slat or a slot can regenerate a boundary layer. But a slat or a slot can also re-energize a boundary layer. So mostly जब आप questions करोगे, vortex generator में regenerate आए, re-energize आएगा, और स्लॉट्स में जनरेट आएगा. वोटेक्स जनरेटर्स में री एनर्जाइज आएगा, स्लॉट्स में रीजनरेट आएगा. ओके. स्लॉट्स में दोनों आएंगे ना, क्योंकि यस, आइडियली स्लॉट्स में दोनों आएंगे. मैं क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ. ओके. व्हेन यू गो एंड डू क्वेश्चंस, यू विल बी ओके, व्हाट डू स्लैट्स डू? रीजनरेट, री एनर्जाइज दोनों रहेंगे. व्हाट विल यू चूज? रीजनरेट. ठीक What है. do vortex generators do? Re-energize, regenerate. What will you choose? Re-energize. इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ. This is what I'm trying to teach you. Okay? You know the concept, but what I'm also telling you, questions कैसे framed है इसके. Okay. Now you will also encounter some questions of vortex generators where you will be asked to choose between re-energize the boundary layer and prevent shock-induced flow separation. So this comes from shock stall का chapter. शॉक वेव्स का चैप्टर, जो हाई स्पीड फ्लाइट का चैप्टर, कम्स फ्रॉम देयर. सो वोर्टेक्स जनरेटर्स का प्राइमरी पर्पस वो भी है. So there will be questions where you'll have to choose between re-energize, regenerate, and shock-induced flow separation to prevent shock-induced flow separation. Oxford, I think, mainly believes in re-energize, but whenever I go to Keith or any other book, prevents shock-induced flow separation is generally the answer, 90% of the time. So priority is taken by this particular action. Okay? This is a priority for us. मैं इसको चूज करना ज्यादा चाहूंगा. So when you see like 10-20 questions, you'll get a flow, you'll get a idea कि इसका आंसर क्या है. Okay, you'll get an idea because the questions are framed in different ways. You'll understand कि कब shock induced flow separation आएगा, कब re-energize आएगा. ठीक है. तो कहाँ पे रखूंगा मैं इसको? It delays the separation. I'll put it at the tip. Okay, you wanna see how does a vortex generator look like? It looks like this. अब बोलोगे ट्रेलिंग एज पे क्यों नहीं डाला? सेपरेशन अगर लीडिंग एज में हुआ, मैं ट्रेलिंग एज में डाल के क्या उखाड़ूंगा? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस यू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द लेयर, राइट? This is exactly what the image is trying to tell you, right? You take the high energy from the free stream flow and put it into the boundary layer. Write down all of this. Take your time. Write down all of this.
Yes, Piyush. मैंने देखो आपको एक ग्रुप में फोटो भेजी है, उसके हिसाब से हमारी री एनर्जाइज हुई लेयर ड्यू टू वॉटिस जनरेटर में तो स्टॉल Sorry. नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ग्रुप में एक फोटो भेजी, देखो हाँ, मैं उसी में हूँ, बताइए। उसमें हमारी री एनर्जाइज हुई हमारी लेयर्स, बाउंड्री लेयर, राइट? तो उसके हिसाब से स्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको रूट पे लगाओगे वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि रूट हम स्टॉल करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टिप। अगर Yes. उसको हम टिप पे लगाते तो अच्छा रहता है, क्योंकि आ, फिर हमारा रूट स्टोर होता ना पहले। ये आपने देखा पुट एट द टिप, लेकिन आपने जो फोटो दिखाई थी उसमें देखो रूट पे लगा हुआ था, जो आपने फोटो No. दिखाई थी। So when it comes to all of these big aircraft, this is a generalized thing. जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट बनता है तो वहाँ पे वोटेक्स जनरेटर वहाँ लगाते हैं बेस्ड ऑन, अब मान लो कि वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं यार, वहाँ पे स्लैट्स भी है मेरे पास, वहाँ पे भी है, जहाँ पे मेरे को जहाँ डिले करना है मैं वहाँ पे वोटेक्स जनरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट अ वेरी जनरल थिंग कि मैं वोटेक्स जनरेटर उठा के बस मैं टिप पे लगाऊंगा, ओके। बहुत ज़्यादा इसकी टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पे उनको मोस्ट ऑप्टिमम लगता है कि यार तुम टिप पे लगा दोगे, ठीक है, तुम वहाँ पे तुम्हारे पास टर्बुलेंस आ जाएगी, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आ जाएगी, बट क्या वहाँ पे बिना वोटेक्स जनरेटर के कुछ और लगा के काम किया जा सकता है? किया जा सकता है, राइट? सो इट्स नॉट वन थिंग विच इज प्लेइंग द रोल। Okay, if you look at fighter jets will have it all across their wing, क्योंकि उनको ड्रैग से फर्क नहीं पड़ता, उनको स्टॉल नहीं चाहिए। So depends from operations, it depends from a lot of R&D goes right into making such wings. Just give me 1 second. Have you noted it down? Note this down as well. I'll be back in 1 second. Okay, let's शुरू करते हैं ना। So now let us try to fix the span-wise flows. Maybe here you'll get your answer, Piyush. Maybe here you'll get your answer. What you also saw was a span-wise wing, sweep back wing, right? So in sweep back wings, what we want to do is we want to reduce the span-wise flow from the leading edge itself, right? And how do we do that? We use wing fences. What is a wing fence? 320 पे आप देखियो, 320 नहीं, sorry. This is a wing fence. Literally a boundary at the fence of the wing. अब अगर आप इसको सामने से देखोगे so it will just look to you like this. But साइड से देखोगे तो आपको पूरी एक प्लेट मिलेगी. So it's basically like a fence. कोई डाउट? पक्का? So जो अपर सरफेस की जो फ्लो है जो इनबोर्ड जा रही है और जो लोअर सरफेस की जा रही है जो आउटबोर्ड जा रही है, क्या ये उसको रोकेगा? Yes. If I have a wing and यहाँ पे मेरे पास एक फेंस है, so यहाँ से जो स्पैन वाइज फ्लो लोअर सरफेस में से जानी चाह रही थी रुक गई यहाँ पे, it will not go towards the tip, ठीक है। So this is a wing fence. This is a wing fence. Now कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जहाँ पे विंग फेंस होती हो? नहीं देखा? So it is there in the Boeing 727. Center of the screen. That's the wing fence. ठीक है? दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा. Okay, what else do we have? We have vortex generators. Again, vortex generators also help us prevent the span-wise flow. So maybe
Piyush, there it will be positioned at that particular place to reduce the span-wise flow. Okay, so now let's say, how does the vortex reduce the span-wise flow? This was a mechanical boundary, a लोहे का boundary. We can also use air as a boundary. मैंने यहाँ पे एक vortex generator बना दिया, तो एक vortex create होगी. जो laminar flow है वो vortex को cross नहीं कर पाएगी. The boundary. Okay. So it's like you getting out of a mall. जब आप मॉल से बाहर निकलते हो तो एक ऊपर से नीचे हवा आती है, हाई स्पीड एयर फ्लो एंड ऑफ लाइक अ वोर्टेक्स. अंदर की हवा बाहर नहीं जाती, बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ दैट. वेरी सिमिलर. आफ्टर दैट वी हैव नॉच्ड सॉ टूथ लीडिंग एजेस. ये तो काफी कॉमन है, स्पेशली इन फाइटर जेट्स. What is a notch? Mobile geeks, what is a notch? बताओ. That's a notch. Look at this. Vortex generators, 1. Notch leading edge. Leading edge में notch बना दिया. एक नॉच बना दिया. क्या होगा? इससे भी vortex ही जनरेट होगी. सेम थिंग. डॉग टूथ लीडिंग एज, डॉग टूथ या फिर सॉ टूथ. सॉ टूथ क्यों बोलते हैं? सॉ ब्लेड होती है ना, ऐसे चक 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 ट्रायंगल वाली, उसके तरह नहीं है डॉग टूथ या सॉ टूथ लीडिंग एज. ठीक है. बाउंड्री लेयर के लिए फेंस, समथिंग दैट वी सॉ. दिस विल आल्सो प्रिवेंट द स्पैन-वाइज फ्लो. ओके. द नेक्स्ट, इसके बाद जो लिखे हुए थे, दे वर वोटेलॉन्स एंड पाइलॉन्स. ओके. So what are votelons and pylons? Wing fence, but lower surface पे is a votelon. What is a pylon? Pylon is basically this particular ढांचा. इस ढांचे के नीचे तुम इंजन चिपका दो. जो पूरा आपका इंजन रहता है ऐसे गोल सा, वो विंग से कैसे अटैच रहता है? ये पाइलॉन की मदद से अटैच रहता है. So this pylon is also creating a vortex at the lower surface of the wing. It will help in preventing the span-wise flow to move towards the tip, right? ठीक है, कोई डाउट? भैया फिर तो हमें एक वोटिलॉन और एक वोटेक्स जनरेटर दोनों लगाना पड़ेगा ना एक विंग पे. रीजन विंग वोटिलॉन हो गया कि विंग के नीचे की तरफ, कि नीचे वाली जो हवा है वो ना करे या स्पैन-वाइज फ्लो ना करे, और ऊपर वाली होगी कि वोटेक्स जनरेटर इसलिए कि ऊपर वाली ना जाए स्पैन-वाइज फ्लो पे. उन्हें लगाने पड़ेंगे. Absolutely yes. Absolutely yes. इसलिए आप देखोगे विंग फेंसेस ऊपर भी रहते नीचे भी रहते. ठीक है, कोई डाउट? So have you understood this? Now let's talk about stall warning and stall prevention. So stall warning devices will tell you stall आने वाला है, कुछ करो. Stall आने वाला है, कुछ करो. How is it different from stall prevention devices? Stall आने वाला है, मैं नीचे कर रहा हूं. नाक. Easy? No doubts? अंतर समझ आ गया ना? So Piyush, Srishti, you guys have flown an aircraft. Did you have a stall prevention device? DA-42 में था, if I'm not wrong. जब हम लोग गो अराउंड करते हैं, एकदम से स्टिक पूरी पुश नहीं कर रहे, इसलिए there was a limit कि स्टॉल ना हो जाए. आपने सोचो आप गो अराउंड कर रहे हो और आपने एकदम से स्टिक पूरी पीछे पुश कर दी लिमिट से ज्यादा, तो स्टॉल होने का वो रहता है. तो एक लिमिट थी, वो हो सकता है स्टिक पुशर, if I'm not wrong.
No, that's not what a stick pusher is. So वो जो लिमिट थी वो नॉर्मल लिमिट से कम थी, हाँ. ऐसे कैसे? आप देखो गो अराउंड करोगे, एक ह्यूमन टेंडेंसी I है। got your point. I got your point. But how did they make it? How can you change the limit of it? वो तो I fly think by wire था नहीं. mechanical stop kind of thing, तो probably. mechanical stop will come in during a go around. How will it know that I have to come in at a go around? क्योंकि you're at full thrust. होगा पे उसलिए शायद like हमारे लैंडिंग गियर डाउन होएगा, क्योंकि हम लोगों ने हर बार टेस्ट करते थे फ्लाइट, जैसे प्री फ्लाइट होता है ना, हमारे बैठे एयरक्राफ्ट में सब कुछ चेक करते। एक होता था कि तुम लोग पूरा पीछे खींचने की कोशिश करो, नहीं होगा, हो जाएगा, और फिर फुल पावर देके खींचोगे ना तो खुद पे खुद वो पुश होगी आगे स्टिक, और वहां पे जाके लिमिट पे रुक जाएगी। it's like you pull it back and at full power, like Piyush said, the stick automatically goes a little forward. Like you can sense it going forward. Okay. So that is a, you cannot really call it a stall prevention device. What you can call it is a safeguarding mechanism. Okay, it's basically a reducing the limits of the movement of the control surface. It's not something that you prevent. So, okay, this is a new thing that is there for me. I'll surely look into this. So, what a stall prevention device is, वो stall होने ही नहीं देगा. It prevents the stall at all costs. Okay, so let's come to stall warning devices. Now, there are aircrafts which will not give you a stall warning. You have to create an artificial stall warning. There are aircrafts which have desirable stall characteristics and they will give you a stall warning. Not all aircrafts have stall prevention devices. Those aircrafts who have a tendency to deep stall, mandatorily they have a stall prevention device. Okay. So now let's talk about stall warning devices: angle of attack vane, flapper switch, stall vane, and stick shaker. सिंपल चीजें, नोट डाउन कर लो, पहले चार्ट वार्ट बना लो मेरे को. ये मुझे डीप स्टोल याद नहीं आ रहा, वापस एक और बताओगे? Let me finish this alternative. So, angle of attack vane. What does a vane do? What does a wind vane do? पता है wind vane क्या होता है? बताओ. वो अनीमोमीटर होता है. पीयूष, ये जो आपने किया वो अनीमोमीटर होता है. विंड वेन क्या? वो विंड स्पीड अनीमोमीटर बताता है. Direction बता. डायरेक्शन हो गया ना। वैसे कॉक नहीं है, कॉकरल को तुम ऊपर डाल दो एंड इट द कॉकरल विल पॉइंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द विंड इज कमिंग, द विंड इज ब्लोइंग टू. दैट इज अ वेन, राइट? सो वो कैसे काम करता है? अगर हवा यहाँ से आ रही है तो वो चीज ऐसे 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 घूम के एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ विद द विंड. ठीक है? दैट इज व्हाट अ वेन आइडियली इज. वेन का मतलब यही होता है. And this is exactly how an angle of attack probe in any given aircraft is there. An angle of attack sensor or an angle of attack vane is there. Okay? Please have a look. Do you see this? It's like a vane, it's like a blade vane. And this blade vane can rotate like this to get in line with the airflow. ये कहाँ fitted होता है? ये 320 है, यहाँ पे fitted होता है. At the wings height. So एंगल ऑफ अटैक वेन क्या सेंस करेगा? एंगल ऑफ अटैक सेंस करेगा. कैसे सेंस करेगा? I have an airflow and this particular vane is like this. Okay, if I'm cruising, the vane is also like this. This is to other vane. Now I'm cruising at a very low speed, straight and level, but I'm flying straight and level. The angle of attack is like this. है ना? Basically the angle of attack is like. So ये वेन क्या मेजर करता है? वेन मेजर करता है रिलेटिव एयरफ्लो कहाँ से आ रही है.
और उसको मालूम है एयरक्राफ्ट का पिच एटीट्यूड क्या है, और एंगल ऑफ अटैक के वेन को क्या मालूम है, पिच से मैं इतना नीचे, तो वो एंगल कैलकुलेट कर लेगा, विंग का एंगल पिच के एंगल से पता चल जाएगा, और रिलेटिव एयरफ्लो का एंगल उसको एंगल ऑफ अटैक वेन से पता चल जाएगा। दोनों की मदद से क्या वो एंगल ऑफ अटैक कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकता है, राइट। सो द एंगल ऑफ अटैक वेन हेल्प्स अस मेजर एन एंगल ऑफ अटैक। अब यही चीज डेटा कहीं ना कोई कंप्यूटर में जा रहा होगा, उसने प्रोग्राम कर दिया, इफ एंगल ऑफ अटैक ग्रेटर देन 15 डिग्रीज सेंड अलार्म, प्रोग्रामिंग कर दी, लाउड स्पीकर में अलार्म बजेगा, व्हेन यू आर क्लोज टू द स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक अलार्म बजेगा, लाउड स्पीकर में स्टॉल की वार्निंग आएगी, स्टॉल स्टॉल कट कट कट, स्टॉल स्टॉल, राइट। So angle of attack vane, flapper switch. Did you understand what an angle of attack vane is? So let's have a look. What is angle of attack vane? A vane which aligns with the relative airflow and measures the angle of attack. If the angle of attack is greater than a certain value, will give you a stall warning. Easy? Great. What is a flapper switch? So flapper switch is something that was there in our TechNam. I'll draw it and I'll show it to you. So what a flapper switch is really, let's say we take this and we take an aerofoil like this, okay? Where is the stagnation point? The stagnation point is here. Okay? And यहाँ पे मैंने एक movable switch डाल दी. It's kind of like a switch over here. And this can move like tuck, 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 tuck. It can move. It's a switch. अब stagnation point जब तक यहाँ पे है, तब तक ये switch को नीचे दबा के रखेगा airflow. Yes. तो अलार्म विल नॉट बी एक्टिवेट। अब जैसे 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 तुम्हारा एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा, जैसे 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 तुम्हारा एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा, स्टैग्नेशन पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे जाते जाएगा। सो इस फ्लैपर स्विच को स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे पॉइंट पे रखा जाता है कि यार इस एंगल ऑफ अटैक के बाद स्टैग्नेशन पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक पे जो फ्लैपर स्विच है ये ऐसे होना चाहेगा और ये ऐसे होना चाहेगा, करेक्ट। फ्लैपर स्विच ऊपर हो जाएगा व्हेन, तो यहाँ पे उसने कुछ तार वार कनेक्ट की होगी, जैसे ठक करके ऊपर हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, अलार्म बजाओ, करंट फ्लो करेगा, अलार्म बजेगा। दैट इज व्हाट अ फ्लैपर स्विच इज। ये हमारे टेक्नाम में था। Movement of the stagnation point activates a switch which creates a stall warning. This switch is a switch which is placed on the leading edge, strategically placed, कि यार इस एंगल ऑफ अटैक के ऊपर स्टैग्नेशन पॉइंट नीचे आ जाएगा, स्विच ऊपर चली जाएगी। Okay. So generally all of these things are creating a oral warning, oral something that you can hear. पानी पी ले पीयूष। Let's now understand what a stall vane is. Piyush Shrishti will explain us what a stall vane is. They had that in their aircraft. So it's on the leading edge of the aircraft, and when it suck air or when there is a stagnation point over it, this is going to give us an oral warning. That is, ये था भैया एक oral warning विसन से आता है एक। So, like Piyush said, it is on the leading edge of the aircraft. I think when there is a pressure difference that is created, the stagnation point also will move below the leading edge, and therefore a warning is created. Okay, I'll explain. So यहाँ पे ना दो टाइप के होते हैं यार। There is a little gray area here. या आपके पास आपका विंग है, विंग के लीडिंग एज में हम लोगों ने एक छोटी सी सीटी लगा दी है, there's a vessel, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, there is one certain type जो एक सक्शन पे ऑपरेट करता है, और दूसरा टाइप होता है जो ब्लोइंग पे ऑपरेट करता है। Different aircrafts have different. Mostly I think Cessnas have the suction type, right? So I'll first teach you how does the blower type वाला thing work. So तुम्हारा विंग है एंड तुमने विंग के यहाँ पे एकदम ऐसे लीडिंग एज के नीचे ना यहाँ पे एक विसल लगा दी है जिसकी ओपनिंग इस डायरेक्शन में, मतलब जब हवा यहाँ पे डायरेक्ट इसके मुंह पे पड़ेगी ना
वो एक सर्टेन एंगल ऑफ अटैक पे ही पड़ेगी या उसके ऊपर ही पड़ेगी, उसके पहले तो पड़ेगी नहीं। जब वो उस एंगल पे हवा पड़ेगी, हवा इसके अंदर जाएगी और मस्त सीटी बजेगी, और वो सीटी कहाँ सुनाई देगी? कॉकपिट में। लिटरली इट इज नॉट इलेक्ट्रिकल वार्निंग, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स। व्हाट इज इट? इट इज अ वेरी सिंपल, हवा ही आपको बता देगी, and you will be able to hear that whistle in your cockpit. It's a very loud whistle. Why is it a very loud whistle? You're flying at 100 knots, maybe 60 knots. Even if you're flying at 60 knots, 50 knots, you're basically cruising at 60, 95 kilometers an hour. Okay, it's a very good speed. There's another one which works on the basis of suction. Okay, so again you have a wing and यहाँ पे आपके पास कुछ whistle है, जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर है it's good. अगर एंगल ऑफ अटैक हाई हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है, so air will be sucked out of this and a warning will be created. Same thing whistle, but in the opposite direction the air is flowing. Okay, there are two types. Any doubts? Easy. So it's a vein, a wind vein, जिसके ऊपर से अगर हवा ब्लो करेगी तो सीटी जैसी आवाज आएगी. What is a stall vein? The movement of the stagnation point blows a whistle at a particular angle. Cannot explain it in more simple words than this. Okay. Lastly, we have an artificial stall warning, which is known as a stick shaker. So, ये आपके Boeing 737s में है. Coming back, stall में stick shaker. Artificially आप stick को shake कर रहे हो. Boeing 737 में होता है, बढ़िया सी चीज है, मजा भी आएगा देखने. So what he's trying to show you is that there from the stick, जो आपकी कंट्रोल कॉलम है उसके नीचे उसने एक ऑफसेट मास का एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट बनाया. So that offset mass is rotating at a very rapid pace. What it will do when it rotates, it will vibrate the entire control column. Stick shaker. So what are you basically trying to do is you're artificially trying to create the aerodynamic buffeting. What you're trying to do is you're artificially trying to create the aerodynamic buffeting. Okay? Any doubts? It's a mechanical stall warning device. Let's just call it that. Okay, so when does a stall warning come? A stall warning comes 5 knots or 5% ahead of the actual stall speed of the aircraft. Okay, so there are two certain class with aircrafts which have a stick pusher and an aircraft which does not have a stick pusher. So the aircrafts which do not have a stick pusher, you really don't need to care much about that because you don't have a tendency to get into a deep stall. The stall warning or the stall speed, you can recover very easily. So VS1G or the reference stall speed. So VS1G small aircrafts के लिए, VSR बड़े aircrafts के लिए. यहाँ in general terms VCL max जो हम लोगों ने last day पढ़ा, उससे 5% ahead आप stall warning की speed रखते हो, या 5 knot. So ये 5% और 5 knots क्यों है? I'll tell you. So let's say your stall speed is 100 knots. So what will be your stall warning speed? When your speed goes below 105 knots in straight and level flight, you will have a stall warning. But let's if we had to take 5% only, तो अगर हमारी stall speed 140 या 160 knots होती तो उसका 5% क्या हो जाता? 8 knots, right? So 168 पे मेरे को stall warning आ जाती. But अगर मैं यही रेशियो कंटिन्यू करूं and I take it for a Cessna where his stall speed is 40 knots or 42 knots, उसका 5% will be how much? 2 knots. 2 नॉट तो चुटकी में खत्म हो जाता है यार. So here we cannot have this low margin. तो कम से कम 5 knot and 5% of higher.
कहने का तात्पर्य यही है. अब पता चला 5 knots or 5%, whichever is higher. क्यों? Great. Now for aircrafts which have a stick pusher. So in aircrafts which have a stick pusher, in this case, it's generally the bigger aircrafts, right? So इनमें जो आपकी reference stall speed रहती है, जो आपका मैनुअल बोल रहे हैं पापा स्पीड पे तो स्टॉल हो गया, अब वो स्पीड भी ना वो 2 नॉट आगे रहती है स्टॉल स्पीड के, बिकॉज ऑफकोर्स सेफ्टी मार्जिन. पायलट को दिख रहा है VSR आ गया, वो कुछ तो करेगा. So that's because we don't want to get at VCL max, because उसके बाद तो वो ऊपर ही जाएगा ना. Why do we want to go to that adverse pace? No. So even if you're stalling at let's say 100 knots, your reference stall speed which will be shown to the pilot and calculation purposes will be 2 knots or 2% ahead of it. And जो stall warning रहेगी will be 3 knots or 3% ahead of it. कायदे से stall warning जो है वो 5% बाद ही आ रही है, उसमें changes है ही नहीं. फर्क क्या हुआ, बस VSR उठ के आ गया अभी, और कुछ नहीं. कोई डाउट? ये क्यों? Because you have something known as a stick pusher. Now what is a stick pusher? So what is a stick pusher? Generally we will discuss this a little later, but I will give you a brief idea about this. So a stick pusher, as the name suggests, what is the stick? Stick is the control column of your aircraft. Stick is basically the control column of your aircraft, okay? And when a stall happens, you're supposed to push the nose down. He will do it for you. It pushes the stick nose down with a certain set of force. Now, why does this become important? Pay close attention. Because जब आप nose up attitude में रहते हो, your aircraft is near about like this, है ना? करीबन 20 डिग्री का पिच होता है स्टॉल करने के लिए. I know it stalls at 16 degrees, but कई बार पिच ही 20 डिग्री होता है. Because upwards, downwards, relative airflow, effective airflow, and all of those things, right? Now, what you also need to understand here is when I'm at 20 degrees of pitch, maybe 30 degrees of pitch, मैं ऐसे और स्टिक ऐसे है, मेरे को उसको ऐसे मूव करना है. I don't only have to push the nose down, applying force, but I also have to work against gravity. So what is a stick push? It's simply an aid which will give you, it will induce a nose down pitching movement mechanically with a certain amount of force. That is what a stick pusher is. Okay? Easy? So we are done with that part. So what I'll do is, I think I should be continuing with this chapter of stall. So Piyush, Shrishti, I shall extend this class a little bit and we'll adjust the airline prep ka timings with it. Okay? Let's talk about the factors affecting stall speed. We have weight, load factor, we have turns, we have the position of the center of gravity, we have high lift devices, we have the power of the engine, we have wing contamination, and we have the sweep back nature of the wing. All of these things affect the stall speed of the aircraft. Okay, now let's see how. In this, weight, load factor, turns, CG position are directly to do with weight and lift. Very directly. Okay. At any given point of time, if the aircraft requires to obtain more lift or is actually obtaining more lift, your stall speed will increase. Easy. I want you all to close your eyes. Imagine the lift equation. Lift is equals to half rho v squared CLS. But on the left side of this equation, you also have weight is equals to lift is equal to half rho v squared CLS. Now I've written very heavy passengers inside my aircraft. The weight increases. Hence, the lift that I require to build also increases. But my airframe remains the same. The surface area of the wing is the same. The coefficient of lift or the angle of attack that I have is the same. The density is the same. Half remains the same. What can I increase? The speed. So at CL max, if I have to increase the lift at CL max, my stall speed will increase. Do you guys understand this? Now, what is the relation between the stall speed of the aircraft with the lift? It's definitely not a linear relationship. है ना? वहाँ पे v squared और यहाँ पे lift. It's not a linear relationship. Vs is directly proportional to the square root of weight or the square root of lift
बिकॉज लिफ्ट इज इक्वल टू वेट इन स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट. ठीक है, इसीलिए वेट लिफ्ट की जगह मैंने यहाँ पे वेट लिखा. So why square root? Because lift is equals to half rho v squared CLS. Now for any given day, CLS is constant, half rho is constant. So V is directly proportional to lift or weight, square root of weight, and you're proportional to Vs. Does that make sense? So अब मेरी बात समझो कि यार अगर आपकी वेट 2 गुना बढ़ गई ना, तो आपकी स्टॉल स्पीड कितने गुना बढ़ेगी? Under root 2 times. What is root 2 times? 41%, 1.41, 1.414, right? So your stall speed will increase by 41%. Questions कैसे आते हैं? Questions ऐसे ही आते हैं. Generally यही आता है. Let's say your weight increases by 2 times. What will happen to your stall speed? अब इसकी अंग्रेजी 2 तरीके से आप लिख सकते हो. The stall speed will become 1.41 times. या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर अगर इंक्रीजेस बाय, अगर उसने क्वेश्चन में बोला उसकी अंग्रेजी में अगर वो कहता है इट इंक्रीजेस बाय, तो आपको ये बताना कि कितने से बड़ी है. तो वो 1.41 टाइम्स हुई है, दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. लेकिन बड़ी कितने से? 41% से बड़ी है, क्योंकि पहले वो 1 थी, अब वो 1.41 हुई है, तो 41% बढ़ा है. ठीक है, तो ये 2 तरीके से आपको अंग्रेजी मिल सकती है क्वेश्चन में. ओके, so now if I have something, let's say I have Vs directly proportional to square root of weight. So Vs1 by weight 1 will be Vs2 by square root of weight 2. इतना मैथ्स आप लोगों को आ ही गया होगा अभी तक, है ना? ये हटा दो, ये स्क्वायर रूट हटा दो, ये स्क्वायर रूट को बड़ा कर दो. करेक्ट, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है. इजी. So let's say you want to find out the new stall speed. The examiner or the equation they tell you want to find out the new stall speed. Your weight increases by 30%. Your weight, question says, okay, write down with me, it's a model question. Your weight increases by 30%. Your stall speed increases by dash percent. Okay, so what will you do? You will look at this formula. New speed by old speed is equal to root over of new weight by old weight. ठीक है, so new speed by old speed is equals to root over of weight and weight old, weight new and weight old. So weight new is 1.3 times of weight old, weight old into 1.3. so weight old cancel. so square root के अंदर क्या आया? 1.3 आया. बट व्हाट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो भी अगर आपकी पहली स्टॉल स्पीड थी उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे. इधर आके हर्ष मल्टीप्लिकेशन आता है, ये वाला इधर उधर भेजना आता है. सो वेट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1.3. व्हाट इज रूट ओवर ऑफ 1.3? इसकी भी ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, पहले तो नहीं याद होगी, वापस सिखा देता हूँ. 1.3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे तो नहीं आएगा. अब 3 का तुम हाफ माइनस सम अमाउंट कर दो. 3 का हाफ क्या होगा? मतलब यहाँ पे 3.30 है ना, इसका हाफ 15 हो जाएगा. उसमें से -1 या -2 कर दो, नियर अबाउट जुगाड़ वुगाड़ लगा दो. 1.14 आंसर आना चाहिए, 1.14 या 1.35 समथिंग लाइक दैट आंसर आना चाहिए. ओके, कोई डाउट? सो मैंने कुछ नहीं किया. अगर मेरे को अब वहां पे हम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा टेक्जन के एग्जाम में, एंड इवन इन द एयरलाइन एग्जाम वी विल नॉट हैव अ कैलकुलेटर. व्हाट आई शुड नो इज वेट इंक्रीजेस बाय 30%, speed will increase by 30 by 2 minus something. Take 2 minutes. भैया विंग ड्रॉप में हमारा एक साइड का विंग ज्यादा पहले जल्दी स्टॉल हो जाता है ना विंग ड्रॉप में, तो हमारा फ्लैप्स निकालने से विंग ड्रॉप क्यों होता है? नॉर्मल बताओ. पे क्यों? नहीं, जरूरी नहीं, दोनों हो सकते हैं. बताओ. ठीक है, वो हम लोग इधर करेंगे ना, टाइप्स ऑफ स्टॉल स्पिन में करेंगे. सो जितना भी मेरा वेट बढ़ा उसका 50% इंक्रीज होगा, 50 से थोड़ा कम. यू नीड टू नो दिस. सो इसमें स्क्वायर रूट्स आपको काफी सारे याद करने पड़ जाएंगे. तो एक टेबल बना देंगे इसकी हम लोग यहाँ पे, एंड वील अंडरस्टैंड दिस. ओके, इस टेबल से आपका सारा काम हो जाएगा.
But did you understand how an increase in weight will lead to an increase in the stall speed of the aircraft? Do you have any doubts here? No, right? Okay. Always remember, whenever in doubt, go for this formula. अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल इंक्रीज मैंने आपको बता दिया, इतना आपको झंझट वंझट करने की जरूरत है नहीं, इतने से बड़ा उसका 50% ऐड कर दो. So if your weight increases, your stall speed increases, then needless to say, your CG position will also change your stall speed. If the CG goes forward, what happens to your apparent weight? Increases. Why does your apparent weight increase? प्रेशर What? down moment Explain ज़्यादा it to me a है. little bit more. अब सेंटर ऑफ अगर अपनी सीजी आगे रहेगा, अपना पिचिंग डाउन मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो अपेरेंट वेट आप ज्यादा देंगे कि वो स्ट्रेट एंड लेवल बन सके फ्लाइट. Exactly. आपको टेल प्लेन डाउन फोर्स बढ़ानी पड़ेगी. अगर आप टेल प्लेन डाउन फोर्स बढ़ा देते हो तो आपकी apparent weight बढ़ जाती है. Why? Because any downward force is apparently a form of weight. Okay. So, now let us talk about load factor. For those who don't know what load factor is, load factor is basically G forces. Okay. It's shown by the symbol N, G, whatever. And what is it? It is basically lift upon weight. That's what a G force is. If your aircraft is producing 120 units of lift and your weight is 100 units, then what is your G load? 1.2. Okay, so ये जो लोड फैक्टर है बढ़ता कब है? एंड दिस लोड फैक्टर, अगर आप जहाज के अंदर बैठे हो आपको फील हो रहा है, वो सिर्फ आपको फील नहीं हो रहा है, द एंटायर एयरफ्रेम, एवरी सिंगल मॉलिक्यूल एटम इन दैट एयरफ्रेम इज एक्सपीरियंसिंग द सेम लोड. तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस में लोड फैक्टर्स लिमिटेशंस अगर करते हैं, दिस इज द लोड फैक्टर व्हिच वी टॉक अबाउट. That the airframe is designed to handle 2.5 times more lift than the weight of the aircraft and -1 times of lift. मतलब if your aircraft's weight is 100, your aircraft can produce -100 units of lift. Basically negative. So in straight and level flight, do you guys agree that lift is equal to weight? Yes. So what is the load factor? 1. Just like you're sitting right now. So in an aircraft, do you feel anything? No. It's like you're sitting on a chair, regular chair. But when an aircraft turns, you really feel the G loads. So now in airliners, you don't. Why so? Because in airliners, your maximum bank angle is restricted to 25 degrees or 30 degrees below 5,000, 10,000 feet. You don't really go beyond a bank angle of 30 degrees. So 30 degrees तक आपको यार कुछ G forces महसूस नहीं होता. But when you actually go for your flying and everything, you will be doing really steep turns and you'll be undergoing a lot of things जिसमें आपको G forces पता चलेंगे कि क्या होती है. And it becomes apparent, इतनी अच्छी हो जाती है, you are shown what G forces actually are, that in a 60 degree, 70 degree bank turn, they will simply ask you to move your hand up and you will not be able to move your hand up. इतनी G forces हो जाती है. ठीक है? सृष्टि, पीयूष, you must be able to relate with me. जब हम लोग स्टीप टर्न करते हैं, वी आर ऑलवेज टोल्ड टू कीप आवर वन हैंड ऑन द थ्रॉटल. ऐसे का इधर उधर मत रखो. क्यों? नीचे अगर हाथ पे होगा, अचानक से जी फोर्स बढ़ गई, तुम हाथ उठा के थ्रॉटल तक भी नहीं लेके जा पाओगे. वहीं पे रखो. भैया आपके मैक्स रेट्स कराते थे 75. 60 डिग्रीज. 60 डिग्री तो स्टीप टर्न होता है 45 स्ट्रीप कहते हैं हम लोग, 60 मैक्स रेट्स कहते हैं. यार. आई अग्री विथ यू. तो in a separate base they used to say 45 is a steep turn. In the base that we used to fly, we called it 60 a steep turn. And max rate तो max होता है जितना aircraft लेके जा सकता है. So that is तो technically 3 Gs of load factor, 71 degrees out of angle. This is what I believe, because in airlines also 45 degree angle of bank is a steep turn. Right? ठीक है. So load factor is equal to 1 in straight and level flight. That means each part of the aircraft experiences the same loads, the same load factor, even the wings. So the wings also have to be built strong enough to that extent where if they are producing 2.5 times the lift, they will not bend and break. आप समझ आ रहे हैं zero fuel weight की limitations and everything. So load factor is of course again lift upon weight. यार वेट इज इक्वल टू लिफ्ट. तो हम लोग पहले क्या बोलते हैं, लिफ्ट इज इक्वल टू वेट था, तो ठीक है लिफ्ट की जगह वेट ही रख दो, है ना.
बट अगर तुम लिफ्ट बढ़ा रहे हो तो भैया तुमको स्पीड तो बढ़ानी पड़ जाएगी। सेम ही फंडा होगा जैसा इसका फंडा है। ये वेट हम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि यार एक्चुअली ये क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ लिफ्ट ही तो था, बट हम लोग लिफ्ट की जगह वेट रख रहे थे। यहाँ पे हम लिफ्ट की जगह लिफ्ट रखेंगे। So where does this come from? This comes from here only. How? I'll explain. So we know that a stall speed of the aircraft is directly proportional to the lift that we are producing. We all know this. So Vs1 divided by lift1. Okay. So can I say that Vs2 and the lift that you're producing to square root, right? So for any aircraft, you divide this by weight and you divide this by weight. We can do this, dividing the numerator and denominator with the same value. What is lift 1 by weight? What is lift 2 by weight? Load factor 1 and load factor 2 खत्म. So this is the derivation. Exam में आपको derivation कोई नहीं करने बोलेगा, but this will give you a conceptual understanding that second point is basically the first point but in disguise. ठीक है? So अगर आपकी load factor बढ़ेगी, stall speed बढ़ेगी, again root के हिसाब से. Formula भी same है. Any doubt? Now my question is, if your load factor increases by 2, what is your stall speed? One 1.4 of all speed. 1.4 times? 1.4 times, right? So now, if your stall speed is calculated with a load factor, of maybe let's say a load factor which is less than 1, what will happen to your stall speed? The stall speed would decrease, no? Exactly. So remember earlier time I taught you about VS min and everything, right? So VS min is the minimum stall speed where the aircraft is uncontrollable. So that speed is calculated with a load factor less than 1. So that speed is a little lesser speed. So this is where I was coming from. Let's talk about turns. So अगर 1 से नंबर 2 आया तो ये जो नंबर 3 है ये भी नंबर 2 से आ रहा है, बिकॉज टर्न में क्या होता है, टर्न में लोड फैक्टर बढ़ जाती है. लेट्स सी हाउ. ओके, फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ टर्न वर्क्स. पहले हमारा जो एयरक्राफ्ट था उसका बैंक विंग्स लेवल था, इसे हम लोग कहते हैं विंग्स लेवल. ठीक है, एज लॉन्ग एज योर विंग्स आर लेवल you are producing lift. Now this lift is equal to weight. At any given point of time, this has to be equal to weight. Otherwise, your aircraft will fall down. But now, you have banked your aircraft. Now, this is the amount of force that you need to produce. Okay? But let's say आपने इतना ही to produce this much amount of lift, आप एक certain angle of attack पे fly कर रहे हो, एक speed पे fly कर रहे हो, एक coefficient of lift angle of attack पे fly कर रहे हो, speed उतनी है. Can you change the surface area? No. You can change the speed and the angle of attack, right? Or the speed and the coefficient of lift, right? Now let's say you have to get into a bank. Let's say I'll take it a 30-degree bank. This is a 30-degree bank. So यही लिफ्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो लिफ्ट यहाँ पे हो जाएगी, इतनी सी होगी वो. Same amount of lift you're producing like this, है ना, उतनी अमाउंट की लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. बट टेल मी समथिंग, द कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिफ्ट दैट यू प्रोड्यूसिंग, उसमें से उसका कितना कंपोनेंट वेट को सपोर्ट कर रहा है, इतना सा पिद्दी सा. तो लिफ्ट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स इन अ टर्न. दिस इज नोन एज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट which is supporting the weight of the aircraft. This is known as the horizontal component of lift, HCl, not hydrogen chloride, HCl, horizontal component of lift, which is responsible for the centripetal force in a turn.
टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, ये वो देता है, ठीक है, नो डाउट्स, ओके इजी। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट तो तुम्हारी कम हो गई, तो तुम्हारा एयरक्राफ्ट तो गिर जाएगा। कैन यू डू दैट? कैन यू लेट दैट हैपन? यू कैन नॉट लेट दैट हैपन। सो प्लीज डोंट राइट, प्लीज हैव अ लुक। हर्ष, वंदना, तो अभी आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट कम हो गई, तो आपको मेन लिफ्ट बढ़ानी पड़ जाएगी, सो दैट आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट इनफ है। अब वो तुम कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, सरफेस एरिया चेंज कर नहीं सकते हो, या तो तुम स्पीड बढ़ा दो या तो एंगल ऑफ अटैक बढ़ा दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फंडा क्या है, टर्न में तुम्हारी लिफ्ट बढ़ रही है वेट से ज्यादा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट गिर रही थी। अब जितना ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ बैंक होगा, उतना ज्यादा तुम्हारी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट गिरेगी, उतना ही ज्यादा तुमको लिफ्ट चाहिए होगा। So greater the angle of bank, greater is the amount of lift that you are requiring to produce. So greater the angle of bank, greater will be amount of lift that you'll require to produce, greater will be the load factor. Clear? Any doubts? No, easy. Now please have a look. What is this angle? This angle is known as the angle of bank, theta. Agreed? And what is the vertical component of lift equal to? It is equal to the weight, है ना? लिफ्ट बाय वेट क्या होता है, या वेट बाय लिफ्ट क्या होगा? cos थीटा हो गया, है ना? वेट बाय लिफ्ट cos थीटा हो गया ना, तो मैं इसको n को इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय cos ऑफ एंगल ऑफ बैंक, वेट बाय लिफ्ट। समझ रहे हो? So this is what you had to understand. If you have understood this, you will be able to answer questions. Now I hope you guys know your values of cos, cosine. Farad, cos 0. 1. So 1 by cos. So what is the load factor when the angle of bank is 0? 1 by cos 0 is 1. So 1 by 1 is 1. Okay. Okay. What is cos 45? भूल गए? 12वीं की मैथ्स, 10वीं की मैथ्स है यार ये तो। Ankit, you should know this. 1 by root 2. 1 by root 2. Answer it. Very good. कहाँ पे थे? मुझे लगा फराज से पूछ रहे थे तो मैं चुप था। उसने नहीं बोला ना, should help. चलो कोई नहीं, तो 1 by root 2. 45 angle of bank अगर आपका है तो what should my load factor be? 1 divided by 1 by root 2. So root 2 becomes my load factor. सुनो, लोड फैक्टर रूट 2 है, स्पीड रूट 2 नहीं हुई है। स्पीड करने के लिए इसका भी रूट करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से समझना, ये रूट 2 लोड फैक्टर हुआ है, तो लोड फैक्टर 2 गुना कब होता है? 60 का कॉस कितना होता है? 1 by 2. 1 by 2. तो 1 by 1 by 2 is 2. 1 divided by cos 60. What is cos 60? 1 by 2. Load factor क्या आ गया? 2 आ गया. So we can very clearly see as my cosine angle of bank is increasing, my load factor is also increasing, right? So I should have the values of cosine in my head, and ये मुझे रटनी है by hook or crook. You will not have a calculator there with you. You have to mark up these values. Okay? So 30 degree, it's root 3 by 2. What is root 3 by 2? अगर मैं root 3 by 2 देखूँ तो 0.866 आता है, लेकिन मेरे को तो 2 by root 3 चाहिए ना, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। करो, ओ ह्यूमन कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो और वैल्यू याद रखो।
2 divided by, what is root 3? Do you know the value of root 3? Do you know the value of root 2? Do you know the value of और रूट 3 की 1.7 कुछ है 1.732? और What is root 2? 1.414. 141 1.41 ये पता होना चाहिए. तो 2 डिवाइडेड बाय 1.732 कितना होता है? ओ भाई कैलकुलेट करके जल्दी आंसर बता, टाइम ना वेस्ट कर. Harsh is not bothered to calculate it. 1.17 1.15. 1.15, वेरी गुड. ठीक है. सो अब देखो, load factor when you're at 30 degrees becomes 1.15. See, angle of bank हमारी 0, 15, 30, 45, 60, 70, 90. So when you are at 30-degree bank, your load factor is 1.15 times. When you're at 45-degree bank, as we discussed, root 2, your load factor becomes 1.414 times. When you're at 60-degree bank, 2 becomes the load factor, है ना? 1 cos 60 is half. 70 में मोटा मोटी याद रख लेना 3 आता है. ठीक है, these are something which is outside the table, so you should know this. 15 में क्या है, मोटा मोटी 1.04 आ जाता है, ये याद रख लेना. ओके, 0 का तो यार पता ही है तुम लोगों को मैंने. सो अगर कोई तुमसे पूछे कि लिफ्ट कितनी बड़ी, लोड फैक्टर कितना बड़ा, है ना? इफ इन द एग्जाम यू आर आस्क्ड कि इन अ 60-degree बैंक लिफ्ट इंक्रीजेस बाय हाउ मच, आप ये वाली वैल्यू दोगे. लोड फैक्टर इंक्रीजेस बाय हाउ मच, आप ये वाली वैल्यू दोगे. बिकम्स 1.414 टाइम्स. अगर आपसे पूछे इंक्रीजेस बाय 41%, तब परसेंट बोलोगे. ठीक है, लेकिन अगर स्टॉल स्पीड पूछेगा तो इसका रूट कर देंगे. रूट 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 रूट. अब रूट करने की मस्त तकनीक सिखाई थी मैंने अभी आपको. क्या तकनीक थी यार? देखो, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू तो याद होती है. रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू तो याद होती है. तो मैं 3 का तो आपको मालूम ही है कि यार 70-degree बैंक है, रूट 3 होगा, 1.732 आंसर आएगा. सो द angle of bank increases by 70 degrees, lift and load factor will become 3 times, stall speed will become 73% higher. 60-degree बैंक में आपकी लोड फैक्टर 2 गुना हो जाती है, लिफ्ट 2 गुना हो जाती है, आपकी स्टॉल स्पीड 41% से बढ़ जाती है. 45-degree बैंक में लोड फैक्टर 2 टाइम्स हो जाएगा. तो इसका रूट कैसे निकालेंगे? 1.41 है, 1 रखो, 41 का आधा करो, 20 आता है, उसमें से 1 माइनस कर दो, 19. 15 आधा करो, 7.5 आता है, 8 हो जाएगा, माइनस 1 कर दो, 8 का 7 हो जाएगा. सो 1, 15 का आधा 8 पकड़ेंगे, 7.5 का 8 पकड़ेंगे, माइनस 1 कर दो, 7 हो जाएगा. ठीक है, 15 का 1.04 था, 4 का आधा 2. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर. इवन इफ यू रिमेंबर द टॉप लाइन, you will easily in the exam be able to calculate the bottom line. But if you don't remember the top line, you will not be able to calculate an answer. Okay, so funda yahi hai, if A increases by 20% in load factor of it, there's a 10% increase in VS, half increase. Okay, close to. So this brings me to the idea of an accelerated stall. So अंकित, हमारी स्टॉल स्पीड होती है लेट्स से 49 knots in a clean configuration and I'm cruising at 70 knots. गुड, डाउनविंड के आसपास, अप्रोच के आसपास हम लोग यही कुछ स्पीड मेंटेन करते हैं, 70, 75, 80 मैक्स टू मैक्स. अब मैं 80 knots तो मेंटेन कर रहा हूँ, बट नाउ आई वांट टू गेट इनटू अ 60-degree एंगल ऑफ बैंक. What will be my new stall speed? If I'm flying at 70 knots, my stall speed is 49. You can consider 50 for calculation purpose. I'm going in a 60-degree angle of bank. My load factor will increase by 2 times. My stall speed will increase by 41%. है ना? So what is 41% of 50? 20 knots. 20, 21 knots max to max.
सो 50 तुम्हारी स्टॉल स्पीड थी, कितनी हो गई अभी? 70 हो गई। मैं कितने स्पीड पे था? 80 पे था। मेरे पास 30 नॉट्स का मार्जिन था। अब कितना मार्जिन है? अगर इसी जगह मैं 70 नॉट्स पे टर्न बनाता तो आई वुड हैव बीन इन अ 60 डिग्री बैंक एंड इस एटीट्यूड पे मेरा एयरक्राफ्ट स्टॉल कर मौत मौत। है ना? तो ये फंड है। तो ये फंड है, ठीक है। दिस इज व्हाट विल गेट यू इनटू एन एक्सेलरेटेड स्टॉल कि यार लोड फैक्टर बढ़ जाती है, आपको पता नहीं चलता। एंड मोर ओवर जब आप फ्लाई करते हो आपको हाँ लाल बत्ती में नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट गो बिलो द स्पीड, बट स्टॉल स्पीड बढ़ गई है इसका कोई इंडिकेशन तो मिलता है। So that is why whenever you do a steep turn, it is always said that you go to a speed of 90 knots and then you do a steep turn. Okay. CG position as discussed. Okay, we've gone through that. Talking about high lift devices. Whenever you extend your high lift devices, CL max increases, stall speed decreases. Do you want me to explain this? Or I believe we have done this in the chapter of flaps. Okay. Okay. Talking about power. How do you say the word POWER? It's not power. It's power. Okay, it's not power, it's power. Now, पावर अगर आप बढ़ा देते हो स्टॉल स्पीड गिरती है, चाहे आपका वेट बढ़े कम हो कुछ भी। कैसे? फॉर अ पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट देयर आर टू थिंग्स। फॉर अ पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, इसका रीजन यहाँ पे, फॉर अ पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट यहाँ पे आपका पिस्टन इंजन है और यहाँ पे आपका मस्त एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो वेन एवर यू आर डेवलपिंग पावर, दिस if for a propeller aircraft things are different for different, this is inducing some mass of air backward। तो जब प्रोपेलर है, अगर आपका विंग माउंटेड भी है इंजन, तो वो विंग के कुछ हिस्से के ऊपर अगर आपका नोज का एटीट्यूड ऐसा है, इवन इफ योर नोज एटीट्यूड इज लाइक दिस, योर एंगल ऑफ अटैक शुड बी लाइक दिस, बट वो होगा नहीं बिकॉज प्रोपेलर तो ऐसे घूम रहा है, प्रोपेलर इसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन में हवा फेंकते रहेगा, तो इट विल डिले द स्टॉल। प्रोपेलर तो पुश कर रहा है ना फोर्सफुली हवा विंग के ऊपर बैकवर्ड, तो इट विल प्रोड्यूस लिफ्ट, स्टॉल होगा ही नहीं। So it will stall at a lower speed. Understood? Because the propeller is inducing the flow of air. This is for a case of a piston engine. For a jet engine, how are things different? Let's say in this case, this same guy is producing thrust from a jet engine. Now this jet thrust is produced like this. Now only this component is acting in the forward direction. This component thrust is supporting the weight of the aircraft. So lift required to produce is less. Stall speed is. So basically, instead of lift supporting a component of the weight, the thrust is supporting a component of the weight. It's marginal. It's a very small value. It's a very small factor, but it's something that manufacturers and everyone, they think about. Okay, so generally speaking, yes, whenever you develop a lot of thrust or power, you will stall at a lower speed. In fact, when you go for your flying, they'll make you do this exercise. They'll keep the propeller off. They'll make you stall. Okay, stall speed is 49. But then they'll keep the propeller on, maybe 1700 reference RPM, and then they'll pull the stick full back. आपका जहाज लिटरली ऐसे क्लाइंब करता है और फिर बहुत नोज अप एटीट्यूड में और बहुत लो स्पीड में जाके स्टॉल करता है। कई बार तो वो जो एयर स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है, वो इंडिकेशन जीरो होती है। एयर स्पीड रियली डजंट बिकम जीरो, इंडिकेशन बिकम जीरो। क्लियर? Let's understand swept back. So the funda is sweep back wing में only that component which is 90 degree to the longitude, the leading edge, is producing lift. बाकी का जो जितना दूसरा component है, that is तो responsible for spanway law. Only that component which is along the chord is responsible for lift production. तो अगर मैं sweep back बढ़ा दूंगा, सुनो मेरी बात है, पहले मैं 100 नॉट पे क्रूज कर रहा था,
100 नॉट पे स्टॉल कर रहा था, लेकिन कॉर्ड वाइज लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास 100 के 100 नॉट्स थे। देखो मेरे को 100 नॉट चाहिए, मेरे को मालूम है मेरा CL इतना है, मेरे को एस इतना है, सरफेस एरिया इतना है, डायनामिक प्रेशर डेंसिटी हाफ रो व्हाटएवर इतना है, और लिफ्ट इतना है। आई नो फॉर द गिवन वेट आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ स्पीड ओवर माय विंग्स प्रोड्यूसिंग द लिफ्ट। अग्रीड? अब मेरे पास रेक्टेंगुलर विंग है, मेरे को मालूम है मेरे को 10 यूनिट की हवा चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर विंग है, सारी हवा इज प्रोड्यूसिंग द लिफ्ट, 10 यूनिट की हवा मिल रही है, मेरे लिफ्ट के इक्वेशन में 10 यूनिट की हवा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्वीप बैक कर दिया मैंने। तुमको चाहिए 10 यूनिट, अगर तुम इसी की जगह 10 यूनिट पे फ्लाई करते, बट देन 10 यूनिट्स ऑफ एयर फ्लो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग द लिफ्ट, इज इट? नो, तब वो कम हो जाती। तो अब हमको विंग के ऊपर तो 10 ही चाहिए ना, तो ताकि मेरे को अलोंग द कॉर्ड 10 नॉट की स्पीड मिले, मेरे को एक्चुअली हवा के थ्रू फास्टर क्रूज करना पड़ता है टू मेंटेन 10 knots over the wing. I have to fly at 12 knots. मैंने और बढ़ा दिया sweep back. Now to maintain 10 knots over this wing, I have to fly at 18 knots this speed. Now do you understand how does my stall speed increase? Still we use sweep back wings. Okay? जितना स्वीप बैक किया, वेट उतना ही था जहाज का, सरफेस एरिया भी उतनी थी, डेंसिटी भी उतनी थी, एंगल ऑफ अटैक भी उतनी था, लेकिन जो V है वो मेरे को 10 नॉट का चाहिए अलोंग द कॉर्ड। रेक्टेंगुलर रखोगे तो 10 का 10 मिल जाएगा, स्वेप बैक रखोगे तो हमको 10 चाहिए, उसके लिए तुमको 12 रखना पड़े, 15 रखना पड़े, तो अब मेरे को 10 चाहिए, पहले 10 ही रखना पड़ा था स्टॉल होने के लिए, अभी 10 चाहिए, 12 रखना पड़ा, तो you're stalling at high speed, which is bad. Write it in your own words. Lastly, ice and wind contamination. Of course, CL goes down. What happens when your wing is contaminated? What happens to your coefficient of lift? Goes down. To maintain the same amount of lift, what will happen to your stall speed? Any doubts? You are successfully completed with factors affecting stall speed. Write it down in your own words. Take a 2-minute break. I'm here. If you have any doubts, you can always unmute and speak, and I'll be here. चलो, let's start with types of stall. करवा चुका हूँ, ब्रीफ कर चुका हूँ वैसे तो इसके बारे में, आज आप सिखाऊं। डीप स्टॉल बता देता हूँ मैं, बाकी आप बताओगे मुझे, ठीक है? सो पीयूष, a deep stall is also known as a stupor stall, which happens in a swept back wing aircraft. Okay, why does it happen in a swept back wing aircraft? Because a normal unswept back wing will be like this. Swept back wing will be like this. So the aircraft will stall from the behind of the wing. So more lift is not produced from the behind, it's produced from the front. So where will the center of pressure move, Piyush? When the center of pressure moves ahead, Piyush, what happens to the nose pitching moment? कैसे बताओ? सेंटर ऑफ प्रेशर आगे हुआ ना, नोज पिचिंग मूवमेंट अप आएगी। कैसे? सेंटर ऑफ प्रेशर आगे बढ़ा, वो ऊपर आगे ज्यादा जाएगा ना, फिर ऊपर जाएगा, नोज ऊपर जाएगी, हाँ। ठीक है? सीजी के आगे चला गया, सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर से आएगा, ठीक है? और अगर सीजी के पीछे भी था सेंटर ऑफ प्रेशर, तो वो नीचे डाल रहा था, ज्यादा डाल रहा था, सीपी आगे आ गया तो नीचे कम डालेगा, तो टेक्निकली ऊपर ही आ गया। ओके, मैंने बोला था रट लो इसको, सीपी पीछे जाएगा, नाक नीचे जाएगी, सीपी आगे जाएगा, नाक ऊपर जाएगी, बोला था। नाउ ये डिजायरेबल स्टॉल कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं? दिस इज नॉट अ डिजायरेबल स्टॉल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, so when your CP moves forward, your pitch up tendency increases. This will push the aircraft into a deeper stall. The aircraft will naturally trend to increase in angle of attack, increase in pitch attitude. This is something do we need? No. This is why we put something known as a stick pusher. Now this will become more dangerous if you have a T-tail plane, because if you have a T-tail plane, that will get submerged in the turbulent airflow.
Okay, so it's like this. You have an aircraft. Air is flowing over this wing, but now you have a turbulent airflow. Now your entire tailplane is submerged. अब वो सारा एलिवेटर यहाँ पे ऐसे 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 भी हिलेगा तो वो नाक को नीचे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. So instead of the aircraft nose going down like this, the aircraft will go down like this. The nose will remain up. Clear? This is what a deep stall is. Aircraft is just blown to deep stall. You need a stick pusher, which pushes the control column forward with a certain amount of force. Shrishti, please tell me what is an accelerated stall? I'm unsure. Accelerated. You were there in the class, right? On the Yes. first day. How Huh. come you don't remember? Okay. So I will be asking you guys Viva. There is a tendency in our class that सब लोगों ने चीजें पढ़ रखी होती है बट वो भूल जाते हैं. So every day you will be asked a Viva prior to class. So what is an accelerated stall? Acceleration here means accelerations due to gravity. Hence the word accelerated. Okay. Again, accelerations due to gravity has to do with high G forces. For example, turns, load factor, pulling out of a dive. Okay. Getting into a steep turn. All of these are accelerations due to gravity, which will increase the stall speed of the aircraft because they are increasing the load factor of the aircraft. An inadvertent stall because of sudden increase in load factor is known as a accelerated stall. Okay. अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी स्टॉल सृष्टि When you recover from a low speed stall, if you happen to recover, like if your airspeed is not accelerated as much, and if you pull back on the nose to get back to your altitude, you're recovering too quick, and it might give you a secondary stall warning. because एग्जैक्टली you're not दैट इज completely- अ सेकेंडरी स्टॉल अ हेस्टी रिकवरी वो अनस्टॉल हुआ ही नहीं है विंग तुमने वापस नोज उठा ली या जस्ट अभी हुआ था तुमने हैंड टू हैंड नोज उठा ली अ हेस्टी रिकवरी What is a shock stall? A shock stall is basically when the airflow separates behind the shock. So you get say air flows, you get a normal shock wave over the surface of the wing. When the air flows past that shock wave, the air has a tendency to separate, just separate away. This is known as shock-induced flow separation. How do you counter this? Highlighted part. Okay. Any doubt? No? Want to note it down? What is shock wave? What is a? What is a shock wave? आते हैं उस पे आते हैं. Note it down. कोई और बताना चाहेगा शॉकवेव क्या होता है? It usually happens in a supersonic aircraft जब बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा एकदम से जाए. हमने वीडियोस बहुत सारी देखी होगी इंस्टा पे आती है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, फाइटर है, एकदम से स्पीड खींची तो एक आवाज आती है ना, वो एक शॉक वेव की तरह कह सकते हैं उसको. That is known as a sonic boom. ठीक है आते हैं. चलो. Let me know. I'm giving you 1.5 minutes to write it down. So these were the different types of stall. Would you like to see a video on deep stall? नहीं. अंकित आज सारी चीजों में नहीं बोल रहे. जाना है क्या कहीं? An aeroplane in flight passes through countless particles of air in the atmosphere. These particles flow in a direction that is exactly opposite to the aeroplane's flight path direction. This is relative airflow, and it's important to remember that the relative airflow changes direction as the aeroplane's flight path changes direction. With respect to the motion of the aeroplane, these particles form straight lines of flow. Let's have a closer look at what happens to this airflow when it flows around the aerofoil of a swept wing design aeroplane. As the angle of attack increases towards the critical angle of attack, the wingtips of a swept wing aeroplane tend to stall first. From here,
The upper surface airflow produces a wake of turbulent and slower airflow behind the wingtips. The swept wing design means that the wings are angled backwards, so the wingtips are located further aft towards the tail. The reduced lift, due to the stalled state at the wingtips, causes the Center of center of pressure. pressure to shift forward towards the wing roots. Forward center of pressure creates an unstable nose pitch-up moment. Reduced lift and more drag cause the aeroplane to sink. The separated airflow from the stalled wings immerses the tailplane in the low-energy turbulent airflow. The elevator effectiveness is reduced. Hence, the pilot is unable to recover from the stall. Common to T-tail aeroplane design, this is called a deep stall or superstall and may cause the aeroplane to become unrecoverable. Now I want you guys to see what is a spin. I have a question. Shashi Piyush, have you ever taught spins and spin recoveries? विंग ड्रॉप में सिखाते थे कि ऐसा होता है तो ऐसे That is a wing drop recovery. Have you been taught a spin recovery? Yeah, we've been taught a spin recovery, but Have you been demonstrated a spin? no. Do you feel any G forces in a spin? Spin is a 1G maneuver. Note this down. And this is what a spin is. This is how it looks from the outside. आवाज थोड़ी ज़्यादा रहेगी, bear with me. Okay. What this guy is going to do is he is going to increase the angle of attack abruptly to a very high angle, and he's going to induce a wing drop, and he's not going to recover out of a wing drop. Okay, what is a wing drop? One wing stalls before the other. This is a spin. Or you recover. Easy. So what is the difference between a spiral dive and a spin? Do you guys know this? Piyush, Shrishti, this question is for you. What is the difference between a spiral dive and a spin? Note this, look at this aircraft. A spiral dive is this, where the flight path is a spiral. What is a spin? This is a spin. This is a spin. Understood? एक बार स्पाइरल वाला दिखाओ भैया. ठीक है? This is the flight path. In a spin, the aircraft is like this. This is how it looks from the inside. Now just hold it. And see how calm are they. Where is the nose? The nose is up. It's not at the horizon. It's about 8 degrees up. Look at the nose attitude going out. Nose ऊपर जा रही है, horizon नीचे जा रहा है. Go. Go. Look at the speeds. Yeah. And call out whether it's stable or not. Yeah. Stable. Look at the altitude. Yeah. Call off every. Yeah, that's zero now. I like Exactly. 6,000. Let go. Listen. Just keep the stick Yeah. back like that. Yeah. 5.5. You can let go. Of the, उसने स्टिक अभी भी पीछे खींची हुई थी पूरी. उसने स्टिक पूरी पीछे खींची हुई थी. He did not recover from it. Okay, let's do it it. doesn't do anything. See. Okay. It's scaring me. 5,000. Okay, Yeah. coming up to 4.5. Yeah. So hands on the It's dash. on the dash. Opposite rudder. Push Opposite that rudder. rudder. Push that rudder. Push it. Push. Hold Push. on Push. to the Push. Push. Push, push. There you go. Now grab the stick. And pull out the dive. Fucking hell. 3,200 feet. Fuck me. Awesome, huh? They lost You won't get that 3,500 anywhere feet. else. This is what a spin is. Okay, and this is how it looks. Understood? Now let us understand the mechanics of a spin. Spin is known as an aggravated stall. Okay, and what has been aggravated, means it has become worse. It starts off with a wing drop. Okay,
So wing drop is not a very technical word. What is a wing drop? Wing drop is basically तुम स्टॉल करो 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 करो, तुम्हारे दोनों विंग साथ में स्टॉल होने चाहिए. एक विंग पहले स्टॉल अगर हो गया ना तो ये वाला पहले गिरेगा, तो दैट इज अ विंग ड्रॉप. खत्म. अब एक विंग पहले क्यों स्टॉल होगा? मजे की बात बता रहा हूं. रिमेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉल I taught you never use ailerons. Correct? I'll tell you why. Now, what is spin? Spin का दूसरा नाम is auto rotation. And what is it? It is a condition in which one wing stalls more than the other. Clear? Now, I want you guys to look at me. Look at my video. Aircraft's angle of attack is going up, 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 up. You're the stalling angle of attack. You're at 15 degrees. Okay? आपने कुछ तो भी ऐसे आपको लगा कि मेरे को थोड़ा ऐसे लेफ्ट जाना चाहिए, ऐसे राइट जाना चाहिए. आपका दिखा रहा है 5 डिग्री का बैंक किधर दिखा रहा है, राइट में दिखा रहा है. आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं एलरॉन दूंगा, लेफ्ट में करेक्ट कर दूंगा. वहीं पे आपकी बम्बू बजेगी. I'll tell you why. So when I take my stick and I deflect it to the left, what happens to the wing? If I take my stick and I deflect it to the left, यहाँ पर जो एलरॉन है वो नीचे जाता है, तभी तो इधर ज्यादा लिफ्ट मिलेगी. यहाँ पे जो एलरॉन है वो ऊपर जाता है, तभी तो यहाँ कम लिफ्ट मिलेगी थोड़ी. And it will rotate like this, correct? This is what happens in normal straight line level flight as well, right? But see what will happen right now. Because you are so close to your stalling angle of attack, यहाँ पे एलरॉन पे अगर आपने इस एलरॉन को नीचे किया, एंगल ऑफ अटैक क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा ना. आप क्या चाहते थे? आप लेफ्ट में लेके जाना चाहते थे, लेफ्ट में लेके जाना चाहते थे. यहाँ पे एलरॉन उसके लिए आपने नीचे किया, क्या ये विंग स्टॉल हो जाएगा अचानक से? Imagine you are trying to get the plane like this and ये वाला विंग ही नीचे जा रहा है. Why? Because you used the aileron to go left. You are asking the aircraft to go to the left. Right wing will get stalled and it will go down. And believe me, when the aircraft acts in an opposite direction, आपका instant reaction क्या रहेगा? अरे राइट विंग गिर गया, और ज्यादा करो. एंड उससे क्या होगा? वो वाला विंग और ज्यादा स्टॉल होगा. एंड ये होता है. Maybe you are studying it right now, but when you're in the heat of the moment, जो सबकॉन्शियस चीज रहती है ना, इंस्टेंट मोटर मेमोरी रहती है, वही किक इन करती है. मुझे भी पता है स्टॉल रिकवरी, मैंने भी वो गलती की है. मैंने वापस और एलरॉन दिया, मेरा विंग ड्रॉप हुआ गंदा वाला. मेरा जहाज ऐसे 110 डिग्री के बैंक में आ चुका था, फिर मैंने रडर देके रिकवर किया, क्योंकि वो विंग ड्रॉप हुआ, मैंने ऑपोजिट एलरॉन दिया और गिर गया वो 110 डिग्री का बैंक बना. And it was a Cessna Lycoming, that too non-fuel injected carburetor 172. ये सब वैसे फ्यूल इंजेक्टेड पे अलाउड होता है स्पिन में for 172. Okay, so this is why usage of ailerons close to a stall is not advised. Call it prohibited. You use your rudders. Clear? Okay. Let's understand stall. As taught, one wing is more stalled than the other. Now let's say in this case the right wing is more stalled. Okay. So right wing ज़्यादा stalled, so this is the downgoing wing. This is the upgoing wing, can we say? So this is more stalled. The downgoing wing is more stalled. This upgoing wing is less stalled. Let's see how things work. You're close to the stall. Both of them stall, but one wing stalls more than the other. Again, we have the normal CL angle of attack curve. And we also have the CD curve. You have the CL curve in blue. You have the CD curve in green. Easy. As soon as this line basically shows you your CL or CD at any given angle of attack. आपका स्टॉल हो गया जहाज. अब एक विंग है जो ज्यादा स्टॉल्ड है, उसकी एंगल ऑफ अटैक 18 डिग्री पे, 20 डिग्री पे. ये डाउनगोइंग विंग होगा. इसका सीएल कम है या ज्यादा है? कम है. लिफ्ट कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा. यहाँ पे ड्रैग ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है. सो ये नीचे भी जा रहा है और इसको ड्रैग भी ज्यादा मिल रहा है. सो इट विल स्टॉप. It will not try to move forward. So it's going like this, and it is not going forward as well. So it's going
ये रुकावट देगा. Clear? Clear? Clear. Now what about the upgoing wing? Upgoing wing में comparatively CL आपका थोड़ा ज्यादा है, so this will give you a little higher lift and little less drag. So this will want to go forward. So you stall, गिरा क्योंकि इसकी लिफ्ट कम, इसकी ड्रैग भी ज्यादा. अब इस पोर्शन में ये वाला अभी भी ऊपर जाना चाहते हैं, अभी भी नीचे जाना चाहते हैं, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग मोर ड्रैग. सो ऐसे स्पिन करेगा, लट्टू बन जाएगा. एंड दिस थिंग इज नोन एज ऑटो रोटेशन. जो मैंने चीज अभी आपको सिखाई है, सेम चीज यहाँ पे लिखी. Understood? No doubts? Write it down in your own words. भैया कई बार क्या होता है, जैसे हमारा विंग ड्रॉप होने जाता है. Say again, आपकी आवाज थोड़ी करके. सॉरी, अब जैसे हम लोग विंग ड्रॉप कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में लेफ्ट की तरफ करेगा, बट एकदम से राइट की तरफ हो जाता है विंग ड्रॉप. क्या रीजन होता है? लाइक मेरे साथ क्या हुआ, मैं विंग ड्रॉप कर रहा हूँ. कर रहे हो हाँ, जानबूझ के. हाँ विंग ड्रॉप कर रहा हूँ जानबूझ के. सो आप क्या करोगे? आप लेफ्ट एलरॉन मारोगे? नहीं, लेफ्ट की तरफ गिरा एकदम से, और एकदम से फिर उल्टा होकर राइट की तरफ गिर गया. What he means to say is when you first when you are in that attitude, your angle of attack is high, none of your wings is stalled yet, but then you can see that the nose would want to go to the left initially. Tendency है कि left जाएगा, but एकदम से right गिर जाएगा. You will expect that the left wing will be a downgoing wing, but ऐसा हो जाता है कि right wing पहले गिर जाता है. So you must have put something in your controls. आपने कुछ तो उसको करेक्ट करने के लिए डाला होगा. वो वेट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है ना. Weight factor? What do you mean by weight factor? Like wait, because say an instructor and you both are sitting and the instructor is heavier than you, तो ऐसा नहीं हो सकता कि because that side is heavy. हाँ नहीं यार, ऐसे नहीं होता है. See, your center of gravity is in the center. The fat instructor is sitting maybe inches away from the center of gravity. Okay? And you're talking about forces that are acting feet away from the center of gravity. That is a bigger role. मतलब ये मेरे साथ हुआ, और कोई कुछ नहीं डाला था, मैंने नॉर्मल कर रहा था विंग ड्रॉप, बट एकदम से ये हुआ. और ये So हमें बहुत maybe ऐसा हो सकता that है. can happen. Maybe that, because see, if an aircraft is an ideal aircraft, it will not happen. It shouldn't happen. But then there are other things that come into place, which is what I can suspect out of this. It can be the propeller slipstream effect, a part of it. Or secondly, what I can expect is some imperfections in the airframe's structure. This is what I expect it to be. Okay? क्योंकि हम एक हेड्स अप देते थे कि ऐसा हो सकता है, तो तैयार रहना, जब पूछ रहा था. Did you see that in India, or did you see it across all aircrafts? न्यूजीलैंड किसी भी एयरक्राफ्ट में मेरे साथ एक बार हुआ था. हमारे पास 5 थे वेक्टर्स, एक बार हुआ था मेरे साथ, वो सोलो था. I have never really observed. I cannot comment on this yet. Because it shouldn't happen. What I suspected it is because of maybe manufacturing imperfections. It's maybe something about a process or phenomena that I'm not really able to connect. स्लिपस्ट्रीम हो सकता है, मैं सोच सकता हूँ उसमें, बट But then it has to be always in the same direction. ओके. है ना? लेफ्ट में गिरना चाहता है, राइट में गिरा. अगर हर जहाजों में लेफ्ट में गिरना चाहता है, राइट में गिरा, then you can call it slipstream. हाँ, But अगर राइट में गिरना चाहता है, लेफ्ट में गिरा, then these are all variable factors. क्योंकि वो एक 1 in 100 फैक्टर में था, लाइक एक आया 100 में से, ऐसे कह सकते हैं ये वाला चीज. It actually happens if you're uncoordinated in a stall. I'll tell you, wing drop always happens if your ball is not in the center. But always happens if your ball is not in the center. If your ball is in the center, wing drop won't happen. And gusty environment mein, to keep the ball centered, you really have to have your eye there. This is what I suspect, but I have never seen it in my flight. Now, how do you recover out of a spin? You saw that video itself. What do you do?
Thrust levers idle. Nose down, stick neutral. What do you mean by neutral? Ailerons have to be neutral. You cannot have it here. You cannot have it here. You cannot have it here, left, right. It has to be nose down and neutral. Ailerons have to be flush with the wing. You cannot have it deflected. तो रोटेट हो रहा है. अब आपको रोटेशन स्टॉप करना है. Full opposite rudder and hold. It will eventually stop. Okay. Now the question is, you are in this attitude. Maybe sometimes you can also get involved. How do you know which side of rudder to press? तुम्हारा एटीट्यूड इंडिकेटर पूरा ऐसे 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 हो रहा है. तुम्हारा डीजीआई पता नहीं कहीं पे भी घूम रहा है. बॉल हम के तो अपोजिट. बॉल के अपोजिट. TC. Turn. Yes, correct. The turn coordinator measures the rate of yaw. If the turn coordinator is to the left, bang right on. That is the instrument that will save you from the spin. ठीक है. अगर तुम स्पेशल तुम्हारा डिसोरिएंटेशन हो गया एंड यू डोंट नो विच साइड टू प्रेस, हो जाता है ना. जब आप स्पिन में जाते हो, इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग मैनूवर. यू फॉरगेट विच साइड द एयरक्राफ्ट एक्चुअली ड्रॉप्ड इन द हीट ऑफ द मोमेंट. लुक एट द टर्न कोऑर्डिनेटर. उसमें विंग ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा. अगर वो ऐसे राइट रडर प्रेस करो, ऐसे लेफ्ट रडर प्रेस करो. Spin recovery, throttle idle, stick neutral and forward. Full opposite rudder till rotation stops. Once that is done, nose down you will maintain, you will build the airspeed. उसके बाद जैसे आपकी स्टॉल की रिकवरी होती है, आप बिल्कुल वैसे करो. एयर स्पीड बढ़ेगी, पावर ऐड करोगे, लेवल ऑफ करोगे, स्ट्रेट एंड लेवल. अंतर क्या है? स्टिक इज न्यूट्रल एंड ऑपोजिट रडर. ओके, यही दो चीजें हाईलाइटेड है. Any doubts? No doubts?